that, my lord, I have 99% marks. I am being ousted by a person who has 56% marks. Is that fair? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज से एक नए मुद्दे को लेकर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, जो कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC/ST कोटा का। इसी के लेकर इस वीडियो पर इम्पोर्टेंट जो आर्ग्यूमेंट्स की वीडियोस हैं उनको मैं अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, आखिरकार ये 7 जजेस बेंच तक कैसे पहुंची, आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले कौन कौन से डिसीजंस ये हो गए हैं, इस पे कौन कौन से कोर्ट ने क्या क्या बोला है, वो सब पहले बात करते हैं। उसके बाद आप ये वीडियो देखें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस केस को लेकर जो भी सुप्रीम कोर्ट्स में अपडेट आएंगी वो सारी चीज़ें इस चैनल पर अपडेट होंगी ही। और आप बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। इस केस में जो एडवोकेट्स आर्ग्यू करने वाले हैं, जिसमें कपिल सिब्बल हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब के हैं, सलमान खुर्शीद हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और बहुत सारे एडवोकेट्स इस मुद्दे पर आर्ग्यू करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्या क्या पॉइंट्स वो बोलते हैं, कौन कौन से मुद्दों पर वो बात करेंगे, वो सब आपको अपडेट मिल जाएगा इस पे। लेकिन चलते हैं बैकग्राउंड में, आखिर इस केस का बैकग्राउंड क्या था। चलिए इसकी बैकग्राउंड में चलते हैं। जब पंजाब गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें 50% जो SC कोटा था उसमें रिजर्वेशन दी थी बाल्मीकिस और मजहबी सिख को। ये पंजाब गवर्नमेंट ने सर्कुलर जब इशू किया तो ये सर्कुलर चैलेंज हो गया हाई कोर्ट में। पंजाब हाई कोर्ट ने इस प्रोविजन को स्टक डाउन कर दिया और उन्होंने चेन्नई जजमेंट का इसमें हवाला दिया। अब ये चेन्नई जजमेंट क्या था? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें 5 जजेस बेंच ने ये डिसाइड किया था स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है सब कैटेगराइज करने के SC कोटा में। ये चेन्नई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की बेंच थी उसमें डिसाइड कर दिया था 2004 में। अब जब ये 5 जजेस की बेंच ने पहले ही डिसाइड कर लिया है तो इसको सेट असाइड करने के लिए इससे ज़्यादा बेंच की ज़रूरत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब 7 जजेस की बेंच है, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं और बाकी 6 जजेस और हैं। अब ये केस डिसाइड होगा सुप्रीम कोर्ट पे, इसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो फिर पता चलेगा क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सब क्लासिफिकेशन करे कोटाज की, SC और ST कोटाज में। तो इसी को लेकर ये केस चल रहा है, जिस केस को लेकर आप यहाँ पर अपडेट मिल जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इस केस में हुई। चैनल को सब्सक्राइब करो और आप ये देखो कि आज क्या जजमेंट, आज इस केस को लेकर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए। As I put it, my lord, normally when we argue cases of reservation, a very common plea is raised that, my lord, I have 99% marks. I am being ousted by a person who has 56% marks. Is that fair? Yes, it is. It is fair because the person who has 56, he never had the means to be brought up in a family that you've come up in. He never had the means to go to a school that you went to the college that you went to, and to the competition preparation that you went through. And today, 99 is not your achievement. It is a conglomeration of all the factors that you've been through. That 56 is in spite of the factors that that child has been through. He has today reached 56 starting from 0. Your ride has been of an airplane from your birth. This person has walked his way to 56. That is what we need to understand. That the person who got 56 had no access to a dignified life. He was brought up in a neighborhood which did not give him any access to good education. What to talk of employment? And eventually, my lord, what are we striking to achieve here? By way of employment, we are wanting to make that person a part of governance.
He has to feel that I am a part of running this country. I am a part of aiding the growth of this country by getting employment. That is why we'll mostly be, my lord, on 16.4. So for that purpose, the obligation of the state is best discharged by affirmative action under 15.4 and 16.4 to give this person who is backward access. We have to give him at least an opportunity. I will go as far as to say, my lord, that the old phrase that you can take a horse to water, you can't make him drink. We will have to make an effort to make that horse drink, because that horse has never seen water. That horse does not know that it is this water which will eventually quench his thirst for becoming a part of governance. He wants it, but he doesn't know how to get it, because he's stuck in a cycle of occupational drudgery, which the society doesn't let him come out of. Though opportunities are available, but they are not being capitalized because of, I would not say the intent, but the effectiveness of the implementation is lacking. Lord, eventually, if we all agree on this, that the goal is equality of opportunity, then what we urge before your lordships today is that measures need to be taken to make this goal not illusionary or formal, not a mere provision on paper. These goals do not have to be illusionary or formal, but actual and effective. They have to be end-oriented. If I can put it simply, they have to be end-oriented. Results have to show. And in this, there is a heavy onus upon the state, either at the center or the state level, for achieving this equality of opportunity. My lord, this implementation has happened in phased manners. There have been amendments in the Constitution. There have been large number of executive orders, memorandums, laws, legislations brought out by various states. Lord, one of them of my state is under challenge before your lordships, from where this litigation arose. Just to put it briefly, though it's not a relevant, my lord, issue that your lordships would be deciding. In Punjab, my lord, we brought out an act in 2006, where out of the posts which were reserved for the scheduled castes, 50% of the posts were reserved for Balmikis and Mazhabis.